Freunden wandern in den Burg, fliegen sehen, kaufen, gucken Norden und westlich, nördlich und westlich indianisch essen. Aber ich finde keine Zeit, weil ich zwei kleine Kinder habe. Ich koche gern jeden Wochenende für meine Familie. Dieses Wochenende kann ich plan indianisch Dal Makhani kochen. Aber ich kenne nicht koche indianisch Flammbrot. Morgen muss ich Sena, Buri und schwarze Lentille kaufen. Also muss ich ich rede gern mit meinen Freunden. Manchmal wir trinken Deutschbier und sprechen ein bisschen Deutsch. Sie trinken Schwert und dann sprechen Sie extra Deutsch, viel Deutsch. Okay, ohne Angst, dann spricht man viel Deutsch. Wunderbar. Das war alles, danke. Okay, cool. Nächste Person bitte. Ein Interesse. Ja, gerne. Meine Hobbys sind Tanzen, Sehen, Fernsehen und lange Fahren im Auto. Einmal oder zweimal im Monat backe ich auch Kuchen. Mein Mann Hobbys sind spielen Gitarre, Malen und Fotografie. Mein Mann und ich malen manchmal zusammen. Am Wochenende schauen wir einen Film und probieren Essen in einem neuen Restaurant. Gut. Das ist alles. Perfekt. Sehr gut. Nächste Person. Kuchen, backen, fotografieren, malen. Sir, can I? Ja, gerne. Bitte schon. Guten Tag, ich spreche über meine Hobbys. Ich mag gute Dramafilme sehen. Mein Lieblingsschauspieler ist Daniel Day-Lewis. Ich mag Schießen. Ich mag Bogenschießen, that is Archery. Ich mag die Sprachen lernen. Ich spreche schon 4 Sprachen und ich will noch 4 Sprachen lernen, bis ich 30 Jahre alt bin. Ich mag Essen und ich will die Türkei für seinen Essen gehen. Das ist alles. Aha. In die Türkei fahren willst du, also ist das Essen in der Türkei so beliebt? Yes, sir. Ah, was ist da? Sir, many things like they have baklava, they have kebabs. Kebabs is very famous in Germany, in France as well. Klar. And other things, like many things they have. Genau. Jैसे चाय for चाय. Thing called khachapuri, it's like one of the good dishes there. Aha. Richtig. Also türkisches Essen ist auch in Deutschland sehr bekannt. Wie Sie gesagt haben, das Kebab. Die Kebab-Restaurants sind in Berlin mehr als in Istanbul. Yes, sir. Das ist wirklich. Yes, sir. Auch hier ist so. Auch Falafel. It's still Falafel. in alle Europe. Und Falafel kommt auch aus der Türkei? Falafel? Yes, sir. Yes, sir. Das Yes. auch. Okay. They don't say kebab, they say kebab. K-E-B-A-P. Kebab. 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 Yes, sir. It's very delicious. I tried it in France. Okay. Ja. Okay. Next. Wer ist dran?
Try. Ja, bitte. Hallo, guten Abend alle. Na, Mein Hobby ist Geschichte lesen, Geschichte schreiben, Essen kochen und Cricket spielen. Aber mein Lieblingshobby ist Geschichte lesen. Ich fange Geschichte an zu lesen, als ich 15 Jahre alt war. Ich lese Geschichte von Rajasthan, India und Weltgeschichte auch. Aber ich mag Geschichte von Rajasthan. Ich denke, Leute, die Geschichte von Rajasthan lesen, mag auch Rajasthan. Zum Beispiel Colonel James Todd und L.P. Kashidori und Mutter von Abraham Lincoln. Ich lese alle Geschichte von Rajasthan. Lass mich euch erzählen. bitte. Geschichte von Chasak Dev. Sir, I want to present the story of Chasak Dev. Chachak Dev, okay? Yes, sir. Bitte schon. Chasak Dev was Tunis on Jaisalmer. था eines Tages in Milton. Fand weißes Haar im Kopf. Tunis war sehr traurig. Das war nicht gut ein heroischer Krieger. सर वो उसने ऐसे सोचा कि वो वीर योद्धा नहीं है. Nach ein paar Tagen lud den König von Multan für einen Krieg, weil im Krieg sterben will. König von Multan kommt mit 15.000 Soldaten. Beide Armeen kämpften. Chasak wurde im Krieg getötet. Chasak war so glücklich, weil gestorben im Krieg ist. Das ist alles. ओके कुएं में कूद जाता. नहीं सर, ये इनकी स्टोरी कुछ डिफरेंट रहती थी क्योंकि जब उसने मिरर में देखा अपनी खुद को तो उसने पाया कि मेरे सिर में सफेद बाल आ गए. और सफेद बाल मतलब मृत्यु मेरी नजदीक है. और जब राजस्थान में जिस तरह आज से 500 साल पहले की ये बात है तो उसने ऐसी धारणा थी कि राजपूताना में आप अगर रहते हो और आप एक किसी वंश के राजा हो और मतलब अगर आप बुढ़ापे में मर गए तो इससे बुरी मौत आपके लिए हो ही नहीं सकती. और अगर आप युद्ध के मैदान में लड़ते हुए मारे जाते हो तो ये बहुत बड़ी आपके लिए उपलब्धि होगी. इसलिए वो बहुत ज्यादा चिंतित हो गया था. उत्सुक था कि कोई उसको मार डालेंगे युद्ध में. ये सर, लेकिन आसपास में जब कोई उसको युद्ध करने वाला मिला नहीं तो उसने खुद ने इनवाइट किया था. Okay. Okay. Ja. Ich finde das lächerlich, aber okay, gut. Next, wer ist dran? Guten Abend. Guten Abend. Jeder hat etwas Hobbys, aber sie ändern Hobbys mit der Zeit. Es ist fertig über meine Familie Hobbys. Zuerst ich möchte sagen über meinen Vater. Mein Vater ist Reiter. Ist 86 Jahre alt und meine Mutter ist religiöse Hausfrau, so dass sie Bücher lesen mag. Mein Vater ist RSS Mitglieder von RSS. Deshalb an viele Aktivitäten teil. Meine Mutter mag die Gärtnern
Freizeichen und meine Hobbys sind Bücher lesen. Ich mag Bewegung. Jetzt Ich bin mag. allein. Was magst Ja. du? Ich Hier mag. habe ich viele Bücher. Was hast du gesagt? Ich mag. Was magst du? Hallo? Ja, kannst du mich hören? Hallo? Ja, ich höre dich schon. Hörst du mich Ja. nicht? Du hast gesagt, ich mag und dann habe ich nicht gehört. Was magst du? क्या पसंद है आपको? ये बात सुनी नहीं प्रॉपर. Ich mag Bewegung haben. Okay, Ruhig. Ruhe. Okay, Ruhe. Ja, Bewegung. okay. Jetzt bin ich allein hier. Habe ich viele Bücher von Berühmte Roman Autoren gelesen. Also Manohar Shyam Joshi, Chetan Bhagat, Kanta Bharti, Munshi Premchand, Divya Prakash Dubey, Mahadevi Verma und so weiter. Ich treffe mich lieber mit meiner Familie, mit Leitern und meinen Freunden. Das ist alles. Alles klar. Okay, gut. Noch jemand? Yes, I will say. Bitte schon. Nicht. Ja. Ich habe keine speziellen Hobbys. Ich denke, ich mag einfach gerne alle jungen Leute so mögen. Ich mag echt ins Kino so gehen, hängen mit meinen Freunden, manchmal Cricket spielen. Wenn ich allein bin, ich surfe gerne im Internet und Computerspiele. In meiner Familie, mein Bruder, immer wenn ihr Kind seid, ihr schaut Fernsehen und meine Schwiegerschwester, sie macht gerne Yoga und meistens in ihrem Handy. Das ist das. Aha. Sehr gut. Und dann vielleicht sagt Reshma auch was. Reshma, Prithi, würden Sie auch dazu was sagen? Sir, I already told, sir. Ah, du hast schon, ja. Reshma ist übrig. Meine Hobbys sind Spazieren gehen, Kochen, Schwimmen. Ich bin in Einkaufen mit meiner Freundin. Reisen an neue Orte. Neue Places. Ja, neue Orte. Richtig. Diese Woche meine Freundin geht Bowling spielen. Bowling spielen, okay. Klar, in Mall. Ja. Aha. Das kostet. Sie können was? Also rollen. Sie müssen den Ball rollen. Bowling. Und dann können Sie auch was gewinnen. You can win something. Manchmal. Sehr gut. Interessant. Okay. Vielen lieben Dank, Freunde. Also wenn wir Hobbys von anderen hören, dann vergleichen wir auch, was mache ich auch noch gerne? Was zieht mich an? इसमें से मुझे क्या क्या चीज अट्रैक्ट करती है? Was mache ich auch? Klar. Hobbys ändern mit der Zeit. Das ist auch richtig. So, neue Orte besuchen, interessant. Lesen ist interessant. Dann für mich, Chachak Dev, das war ein bisschen Neues. Ja,
Die Gesichter waren ganz neu für mich. Yoga machen, sehr gut. Surfen gefällt mir auch. Im Internet surfe ich auch viel heutzutage seit einigen Jahren. Ins Kino gehen, nein, das ist nicht meine Sache. Kochen, nein, das ist auch nicht für mich. Aber mit Freunden treffen ist Unternehmer auch gerne und viel mit Freunden. Das gefällt mir. Einkaufen, nein, das gehört meiner Frau nicht. Ja, mir. Aber dann was noch? Türkei, mein Gott, weiß ich nicht. Bücher lesen, ein bisschen schon. Kann ich. Filme, nein, nicht für Tanzen, nein, das gehört nicht mir. Malen, das gehört meinem Sohn. Und klar, Kleine, beschäftigt sich mit Kindern, ein bisschen beschäftige ich auch, aber nicht so viel. Krieger bin ich auch ein bisschen. Schießen, nein, nicht meine Sache, aber spielen schon, ich spiele ein bisschen. Klar, gut, das war es. Und jetzt sehen wir, welche Hobbys haben die Deutschen? Sie hatten auch etwas, ein bisschen Übersetzung. Das war die Hausaufgabe. Sie können mal checken, vergleichen. Forschung aktuell. This was story of hobbies. What people generally do. Which hobbies are very popular in Germany? Das haben wir hier. Freizeit Monitor, Free Time Monitor. ओके, ये मॉनिटर लगा देते हैं जगह जगह पे, लोगों से पूछते हैं. Und Fernseher bleibt die Nummer 1. एंड टीवी देखना लोगों के लिए अभी भी नंबर 1 है जर्मनी में. ये 2-4 साल पुरानी बात हो सकती है, बिकॉज इतना पुरानी तो है बुक. Die Stiftung für Zukunftsfragen. Stiftung का मतलब होता है ट्रस्ट, कोई ऑर्गेनाइजेशन. Stiftung für Zukunftsfragen stellt heute in Berlin ihren Freizeitmonitor vor. Über 4000 Personen ab 14 Jahren haben an der Studie teilgenommen. And in their interviews, in their activity, more than 4,000 people teilnehmen is participate in their study, मतलब research, in their topic. So many people have participated. Und ab 14 Jahren means from 14 years old, from 14 onwards. उससे पहले वालों को तो क्या पूछे? So 14 plus ये सारे. Seit den 1980er Jahren sind Fernseher und Radio, Hören, Telefonieren und Zeitung lesen die beliebtesten Freizeitaktivitäten. These activities are very popular activities since 1980s. तब से पॉपुलैरिटी कम नहीं हुई है इन हॉबीज की. स्टिल पीपल वॉच टीवी. So Fernsehen is important, very popular for in Germany, for people very important. Radio hören, telefonieren, Zeitung lesen. These are 4 most important hobbies. 98% der Bundesbürger sehen regelmäßig fern. 98% Germans टीवी देखते हैं रेगुलरली. अब रेगुलरली का मतलब सुबह शाम नहीं होता है. रेगुलर का मतलब है जैसे मान लो वीक में एक बार देखते हैं तो भी रेगुलर ही माना जाएगा. एवरी वीक मे बी वीकेंड पे देखते हैं, बट 98% पीपल आर इंटरेस्टेड इन टीवी स्टिल. Sie wollen sich am Abend vor dem Fernseher unterhalten und informieren. In the evening टीवी के सामने बैठते हैं, बातचीत करते हैं, गपशप करते हैं. Sehr beliebt sind auch die elektronische Freizeitmedien. Electronic media is also very important. For example, Computerspiele, Computer games oder das Internet or Internet. Der Alltag ist stressig. Day-to-day life is stressful. Die Leute freuen sich auf das Wochenende.
and that's why people wait for weekends und wollen sich ausruhen and they want to relax themselves, ausschlafen, they want to sleep long in weekend oder sich mit der Familie treffen or they want to meet their family members. Viele wünschen sich mehr Zeit für Hobbys. Many people still wish that they have more time for their hobbies. Mehr Zeit für Hobbys, Sport und Freunde. People wish that they have more time for their family, hobbies and friends and sports. Hobbies, sport and Freunde. Auch ohne Computer oder Handy means people also want to spend time without computer and without mobile. Ohne ist without. Mehr Zeit für Erholung und für soziale Kontakte. Diese Wünsche überraschen mich nicht. Means people dream of, they think they should have more time for social contacts. मीडिया का तो टाइम है ही फिक्स, देखते ही हैं टीवी वगैरह, बट दे वांट टू socialize, they want to meet people, public contact, people contact is important and they wish they have more time for that. In their hectician median wealth, nowadays media world is very hectic, means so many media are there, so in their hectician median wealth nimmt der Wunsch nach Ruhe und Sozialkontakte zu. यहाँ पे वर्ड कौन सी है? वर्ड क्या है इसमें? What is the verb in this sentence? Sir, which sentence, sir? Oh, ये भी नहीं पता आपको? नेमन No, sir, मैं. Okay. In their hectician median wealth nimmt der Wunsch nach Ruhe und Sozialkontakte zu. What is the verb here? Nim. No. नेमन Suneman. Perfect. Zunehmen. Very nice. Suneman. Suneman is to increase. Means लोगों को लगता है कि सोशल कॉन्टेक्ट बढ़ना चाहिए. मीडिया में इतने बिजी रहते हैं हम लोग. फॉर एग्जाम्पल हम भी अब सोचने लगे हैं कि फेसबुक, यूट्यूब और ये सब तो ठीक है, बट लोगों से मिलना छूट गया, वो वापस बढ़ना चाहिए. प्रोफेसर डॉक्टर उल्रिच राइनहार्ट, प्रोफेसर राइनहार्ट ने बोला, Leiter der Stiftung für Zukunftsfragen. He is actually the leader. He is the head of this office, this organization. Leiter der Stiftung, organization. This Stiftung का मतलब है ट्रस्ट. कोई ट्रस्ट काइंड ऑफ संस्था है, उसका हेड है ये बंदा. Wellness ist im Trend. Nowadays people talk about wellness. Health और wellness की बात करते हैं. Immer mehr Leute entspannen sich mit Yoga und Pilates und gehen in die Sauna. Die relax, स्ट्रेस फ्री करते हैं खुद को योगा और पिलाटेस से. पिलाटेस भी ऐसी कोई एक्टिविटी है. और दे गो इन जाउना, स्टीम बाथ वगैरह लेते हैं. Auch die Arbeit im Garten ist beliebt und hilft gegen Stress. Arbeit im Garten, गार्डन में काम करना लोगों को पसंद आता है. एंड इट हेल्प्स अगेंस्ट स्ट्रेस. गार्डन में काम करने से भी स्ट्रेस कम होता है. एंड ट्रेंड जेट्स दिस फोर्ट. क्या ट्रेंड बढ़ रहा है आजकल? फोर्ट जेट्सन. एक ट्रेंड ऐसा भी चल रहा है, देयर einen Seite gibt es mehr Freizeitangebote. Auf der anderen Seite müssen die Menschen aber sparen. एक तरफ देखो तो फ्री टाइम के ऑफर्स इतने हैं, बढ़ रहे हैं वो. यू कैन डू मल्टीपल थिंग्स, हंड्रेड्स ऑफ थिंग्स आर देयर, कोई करना चाहे तो. Und auf der anderen Seite müssen die Menschen aber sparen. इसका मतलब है people want to save their money, time. ऑफर तो इतने हैं, फिर भी लोग बचते हैं कि नहीं चाहिए ऐसे ऑफर. खुद के लिए टाइम चाहिए, लोगों से मिलना है, इन ऑफरों में नहीं फंसेंगे. Immer mehr Deutsche gehen lieber in Schwimmbad als in den Aquapark. More and more people. Immer mehr का मतलब है more and more people are interested
they want to go to swimming pool. Als Indian aqua park. एक्वा पार्क में जाने की बजाय स्विमिंग पूल में जाना पसंद करते हैं। एक्वा पार्क में तो केवल आप देख के आ जाते हैं, लेकिन स्विमिंग पूल में तो आपको एक्सरसाइज करनी पड़ती है, पैर हिलाने पड़ते हैं, हाथ हिलाने पड़ते हैं। तो दैट फिजिकल एक्टिविटी, दैट फिजिकल एक्सरसाइज अट्रैक्ट्स पीपल मोर। Fahren lieber Fahrrad als Auto means people prefer cycling than car driving. So again, physical exercise is involved, but still people go. खुद को थकाना पसंद करते हैं, बजाय चुपचाप लड्डू गोल मटोल बैठने के। Und sie treffen sich gern bei Freunden und kochen zusammen. And they meet their friends and cook together. पहले क्या करते थे, दोस्तों को इम्प्रेस करने के लिए दोस्तों के साथ बोलते थे चलो रेस्टोरेंट, और वहां जाके बैठ गए, खा के आ गए। अब वो कह रहे हैं कि दोस्तों को बुलाते हैं कि यहीं पे कुक करके खाएंगे। तो यहाँ भी लोगों का एक तरह से नजरिया बदल रहा है। Freizeit, Vergnügen muss nicht immer Geld kosten and your free time activity must not cost money. ये जरूरी नहीं है कि लोगों से मिलें, कुछ हॉबी हो तो उसमें पैसा खर्च ही हो। ऐसी एक्टिविटी भी हो सकती है कि मजे भी आए, टाइम स्पेंड भी हो जाए और पैसे भी खर्च नहीं हो। नेचर में इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं या इस तरह की एक्टिविटीज। As far as now here this text is also very important. Two small texts here lese strategian. इसमें वो कह रहे हैं कि रीडिंग की स्ट्रेटेजी है। टेक्स्ट है दो सालन फस्टेन। टेक्स्ट आप नंबर से समझ जाओ। ये कह रहे हैं कि आप अगर इस नंबर को भी पढ़ लो तो भी आपको थोड़ा सा अंदाजा तो लग जाना चाहिए कि इस टेक्स्ट में क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल हम लोग केवल इसको पढ़ते हैं, देखते हैं अंदाजा लगता है क्या अपन को। राशन रिपोर्ट, फिटनेस, स्पोर्ट आर्ट इन डॉइचलैंड, 7 Millionen Menschen. Über 7100 Fitnessstudios. 4,8 Millionen Mitglieder. Okay. Das kostet zwischen 20 bis 60 Euro im Monat. क्या समझ में आ रहा है इससे? कुछ अंदाजा लग रहा है? हाँ, yes sir. क्या? So I think 7 million people are going to 7,000 fitness studios, and there are 7,100 fitness studios. And football sports खेलने वाले 6.8 billion लोग हैं. Wow. और here cost है between 20 to 60 euro in a month. Oh, great. So यही है इस टेक्स्ट में एक्चुअली। तो इनका मकसद यही था कि आप केवल ये नंबर पढ़ लो कई बार तो भी टेक्स्ट समझ में आएगा आपको। इसका मतलब है फिटनेस स्टूडियोज बहुत पॉपुलर हो रहे हैं जर्मनी में, जो कि फिटनेस स्टूडियोज जो कि आजकल फुटबॉल के क्लब के मेंबर से भी ज्यादा मेंबर हो गए हैं जिम्स के। एंड लोग जिम में जाने के लिए कितना पैसा खर्च कर रहे हैं मंथली? 20 to 60 euro. This is not so costly if you talk about health. Für die Gesundheit sicher nicht zu teuer. Okay, next वाला देखते हैं इसमें क्या है। सरमाट मैराथन, दिस इज स्विस मैराथन, स्विट्जरलैंड का मैराथन है, काफी फेमस है। Erster kenianischer Sieg und neuer Streckenrekord। ये कह रहे हैं कि ये जो स्विट्जरलैंड की सरमाट मैराथन है उसमें पहली बार कोई केनियन पर्सन जीता है और नया रिकॉर्ड बन गया। खैर ये तो हेडिंग था। अब देखते हैं नंबर क्या है। 2012 Elften सरमाट मैराथन 42,195 Kilometer lange Strecke. Mischeka 2 Stunden 59 Minuten 54 Sekunden, 2 घंटे 59 मिनट और 54 सेकंड्स। मिशेका
und Daniela. 3 Stunden 29 Minuten 13 Sekunden. 1200 Lauferinnen. ओके, इसको समझ में आ गया? What is the escape time record? कोई रिकॉर्ड बनाया? Any idea? 11th मैराथन है थी। ये 11th मैराथन थी, यस, जिसमें रिकॉर्ड बना है 11th मैराथन। इस मैराथन का नाम है स्मार्ट मैराथन। 42.195 किलोमीटर की थी ये। और मिसेका ने इसमें टॉप किया था 2 घंटे 59 मिनट 54 सेकंड में। और सेकंड पर ये थे दानिएला और टोटल 29 मिनट। और टोटल कितने लोग दौड़े? 1200 लोगों ने इसमें वो किया था। करेक्ट, यही है टेक्स्ट पार्ट। तो ये कह रहे हैं कि ऐसा आप हेडिंग के साथ अगर आप नंबर भी देख लो तो भी आपको एक अंदाजा लग जाएगा कई बार। तो नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है कोई भी तरह के टेक्स्ट में, रीडिंग में। तो ऊपर साइगर था, ये साइगर सीख का मतलब है विन, जीगर का मतलब है विनर। हाँ, ओके। जर्मनी में बर्लिन में एक जीगर्स जोइले करके है, बहुत मतलब फेमस, वन ऑफ द फेमस बिल्डिंग है जीगर्स जोइले ऐसे करके। उन्होंने एक बहुत ही फेमस, और ये उस टाइप का बनाया हुआ है जब वर्ल्ड वार जीता था उन्होंने, तो जीगर्स जोइले बोलते हैं उसको। जीगर्स जोइले का मतलब होता है विक्ट्री सिंबल, कि अपने जैसे विजय स्तंभ है ऐसे जर्मनी में जीगर्स जोइले बना रखे हैं उन्होंने। तो जीगर का मतलब विक्ट्री, जीग का मतलब विक्ट्री, जीग का मतलब तो विक्ट्री, और जीगर का मतलब जीतने वाला, विनर। तो जीगर इसमें मिशिएगा थी, केनिया की। एंड रिफ्लेक्सिव वर्ब में, एक मिनट, इसी से रिलेटेड शायद कुछ टेक्स्ट क्वेश्चन भी है, ये जो अभी अपन ने किया ना मिशेला, और इससे रिलेटेड। देन विल कम टू रिफ्लेक्सिव, हम लोग रिफ्लेक्सिव देखेंगे। Here, yes. Richtig oder falsch? Der Deutsche Fußballbund hat mehr Mitglieder als die Fitnessstudios in Deutschland. Richtig oder falsch? False. 6.8 million versus false. false. Because ये फुटबॉल वाले का था 6.8 मिलियन एंड फिटनेस स्टूडियो का था जीवन, या जीवन मिलियन। सो ये कह रहा है कि जर्मन फुटबॉल के जो फैन है हार्ट मेयर मिटलीडर, वो ज्यादा है फिटनेस स्टूडियो के फैन से। दैट्स रॉन्ग इंफॉर्मेशन, बिकॉज फिटनेस स्टूडियो की ज्यादा है। फिटनेस स्टूडियो की जीवन मिलियन ने चेक किया था अपन ने अभी। In Fitnessstudios in Österreich trainieren mehr als 7 Millionen Menschen. Richtig oder falsch? Falsch. Falsch? Warum falsch? In Deutschland. In Deutschland. ऑस्ट्रिया की तो पॉपुलेशन नहीं होगी इतनी, 7 मिलियन के आसपास टोटली पॉपुलेशन। बहुत फर्क है ना, बर्लिन की 82 और ऑस्ट्रिया की 7 मिलियन, इतना। ओके, सो दैट इज फर्स्ट। डॉइचलैंड, स्विट्जरलैंड की भी इतनी है ना, 7-8 मिलियन, 8 मिलियन। 8 मिलियन। ओके, सो स्विट्जरलैंड की ऑस्ट्रिया की लगभग बराबर सी है। Im Fitnessstudio zahlt man zwischen 20 und 60 Euro im Monat. Richtig. They pay this much.
Fitness-Fans wollen ihre Fitness verbessern und den Körper in Form bringen. Richtig. They want to improve their body and they want to improve their fitness and bring their body in form. Der Zermatt Marathon ist in Kenia. False. Das ist in der Schweiz. 2012 war der 11. Zermatt Marathon. It was the 11th one. Richtig. It was 11th. Beim Zermatt Marathon sind über 2000 Läufer gelaufen. Falsch. False. Wie viele sind gelaufen? 1200. 1200. Daniela Gassmann war mit 3 die schnellste Frau. Richtig. Das ist falsch. Because they are saying this lady was the fastest with this record. The fastest was with 2:59 and then here something 57. Ja. 54. Okay. So she was. So that is false. Falsch. Ja. Ja, so war es. So jetzt kommen wir zu रिफ्लेक्सिव. अभी हम लोग रिफ्लेक्सिव में चलेंगे, बट कुछ कुछ वर्ब का और नाउन का फिक्स कनेक्शन होता है. सो जिस्मिट योगा एंड स्पानन, यू रिलैक्स विद योगा. गिटार है, विच वर्ब इज सुटेबल? स्पीलन. यू प्ले गिटार, सो गिटार है स्पीलन. यस, गिटार इज स्पीलन. ओके, so Spielen ist hier. Schnell mit dem Auto unterwegs. Musik im Radio. Musik im Radio hören. Okay. Ja. Und just mit den Freunden im Park. Treffen. Okay. You meet your friends in park. Okay, here photos auch. Photos, Radio hören, okay. Und dann mit Yoga and Swan. In einer Band singen, okay. Ja, Fotos sind auch hier. Wunderbar. Das ist dann richtig. In einer Band singen. Und sich mit der Zeitung informieren. You inform yourself with the help of the newspaper. Okay, richtig. Und was ist das? Briefmarken. Stamps. Briefmarken sammeln. Ja. Sammeln means collect. You collect some stamps. Post stamps. Okay. Then what is left? Schnell mit dem Auto unterwegs. Sein. Okay. Because you say I am on the way. कैसे बोलोगे? I am on the way. Unterwegs means on the way. I am on the way बोलना है. I am on the way. Ich bin unterwegs. Yes. Ich bin unterwegs. तो अगर ich bin unterwegs बोल रहे हैं तो sein तो आया ही नहीं. आगे क्या? Bin is sein only, sir. Bin is sein only. Very nice. Yeah. Because ich bin, du bist, sie ist. So bin is sein only. Ich bin unterwegs. So schnell mit Auto ist die schnell unterwegs. अगर हमको सेंटेंस बनाना हो तो सेंटेंस बनाओ. वर्ब भी दे रखी है और नाउन भी दे रखा है. अपन जी और एयर से बना लेते हैं. एयर जी, तो ये जी होगी, फीमेल है.
एयर एयर, तो सेंटेंस बनाओ। जी यही वर्ड यूज करनी है। जी मार्क योगा, Jish with yoga. ये वर्ब यही यूज करनी है, जी एंड स्पांट जिश मिट योगा, दिस वन इज करेक्ट। यू हैव टू यूज दीज वर्ब्स ओनली। ओके सर। द वर्ब क्या है इसमें, जिश एंड स्पान, सो जी एंड स्पांट जिश मिट योगा, यस, जी एंड स्पांट जिश मिट योगा, वो योगा से रिलैक्स करती है। और एयर जिस भी है क्या, No, just air spilled guitar है. एयर स्पिल्ट गिटार है, आपकी बार जिस है ही नहीं, एयर स्पिल्ट गिटार है। या नेक्स्ट, जी He crafted dish with Freundin in park. ओके, दोनों को कर दो तो जी ट्रेफन जिश, या फिर एक को करोगे तो जी थ्रिफ्ट जिश, दोनों को कर देते हैं। जी ट्रेफन जिश मिट फ्रॉन्डन इन पार्क, या फिर जी थ्रिफ्ट जिश मिट फ्रॉन्डन। ओके, क्लियर? Air is एयर Air is वर्ब कौन सी है, Sein. ओके, Samen. सो एयर एग्जाम्पल ब्रीफ मार्क, या नेक्स्ट, He heard music in radio. या sie hört Musik im Radio. Und er Sings in einer Band. in the band. singt in einer Band. Next, Informiert sich mit der Zeitung. आपकी बार रिफ्लेक्सिव भी है, यस, एयर इन्फॉर्मियट, बिकॉज एयर के साथ जिश आता है, एयर इन्फॉर्मियट जिश मिड डेयर साइटो, या Sie ist schnell mit dem Auto unterwegs. richtig, sie ist schnell mit dem Auto unterwegs, perfect, so ist es। so sentence भी बना दिया आपने तो, good, and interessant। ओके, ऊपर चलते हैं हम लोग, बड़े ये डायलॉग सुनते हैं पहले किसी के, दो लोग मिलके डायलॉग्स को बोलेंगे। ये कोई लोग हैं जो शायद कहीं घूम फिर के आए हैं या क्या है, वीकेंड कैसे स्पेंड किया, इस पे है ये। सो मे बी अंजना और मनीष, ट्राई फर्स्ट डायलॉग। हाउ दे स्पेंड, Sie war dein Wochenende? Geht so, ich hatte ein Spiel. Und wie war es? War eine Katastrophe. Furcht war, War Furcht, eine Katastrophe. ja. Furcht war eine Katastrophe. Wieso das denn? Erzähl mal. Wir haben 5 verloren. 0 zu 5, इसको zu बोलते हैं। 0 zu 5, 0 zu 5 verloren, 0-5 से हार गए हम लोग। ओ Echt? 0 Punkte. Wie peinlich?
Ja, und das gegen den FC Schwabauschen. Das gibt's doch gar nicht. Das gibt es doch gar nicht. Okay. So, hello Holger. हेलो होल्गर, हेलो होल्गर। तो बात कर रहे हैं दो लोग वीकेंड कैसे मनाया। हेलो होल्गर, वी वर इन Wochenende. हाउ वाज योर वीकेंड? गेट जो ich hatte ein Spiel, ठीक था, गेम था एक हमारा। Wie war es? And how was the game? Furchtbar, eine Katastrophe. It was so terrible. एकदम बकवास। Wieso denn? Erzähl mal. Tell me what happened. What happened? Wir haben 0:5 verloren. We lost it. We lost the game by 0:5. Oh. Echt? Really? 0:5? Wie peinlich. Oh, so shameful. Ja, und das gegen den FC Schwabhausen. Das gibt es doch gar nicht. अरे हारे तो हारे, वो भी इससे हमारी दुश्मन टीम से हार गए। Das gibt es doch gar nicht. ओहो, क्या बोले भाई, ठीक है, ऐसे नहीं हो सकता। मतलब you also feel pity, sorry. Okay, jetzt Arpit und Priti. Bitte schon. Okay, sir. Guten Morgen, Frau Bauer. Na, Sie sehen aber erholt aus. Okay, Arpit ist nicht da. Dann Reshma, du kannst mitmachen. Danke, ich war ja am Wochenende auch in München. In München ist schlecht. Ja, wir waren auf dem Italienmarkt in der Freien Küche und natürlich im Biergarten. Herrlich war das. Oh ja, das glaube ich gerne. Aber am besten hat mir der indische Garten gefallen. Das kann ich mir vorstellen. Und heute Deko, wie schon. Ja, aber 2 Tage sind wohl die Stadt viel zu wenig. Das stimmt. Das stimmt. Das stimmt means it's true. सही कह रहे हो। Das stimmt. So, आप में से म्यूनशन में कौन है? रेशमा, तुम हो म्यूनशन में? Yes, sir. Okay. So, here, Viktualienmarkt. So, guten Morgen, Frau Bauer. Na, Sie sehen aber erholt aus. Aussehen means you are looking relaxed. और होल्ड का मतलब ऐसा लग रहा है वीकेंड सही गया है। You are looking so relaxed. Danke. Ich war ja am Wochenende auch in München. Yes, I was in Munich. In München? Nicht schlecht, not bad, मतलब good. अरे वाह। Ja, wir waren auf dem Viktualienmarkt. Viktualienmarkt में गए हैं हम लोग। In der Frauenkirche und natürlich im Biergarten. यहाँ भी गए हम लोग। Herrlich war das. मजा आ गया भाई। Oh ja, das glaube ich. I know, yes. Aber am besten hat mir der englische Garten gefallen. But I like English Garden the most. Das kann ich mir vorstellen. Yes, I can imagine. Und bei dem Wetter, wie schon. और weather अगर इतना अच्छा हो तो क्या कहने। Ja, aber 2 Tage sind nicht genug für die Stadt. Viel zu wenig. It's very less. Ja, stimmt. सही कह रहे हो। 2 दिन में तो सिटी, इतना प्यारा सिटी कैसे घूमा जा सकता है। 2 दिन तो कम है भाई सिटी के लिए। So, हम भी दर्शन कर लेते हैं विक्टोरियन मार्ट के। ये सब्जी बाजार टाइप का है विक्टोरियन। खाने पीने का सामान मिलता है। 100 ईयर से भी पुराना है विक्टोरियन मार्ट। यस,
Viktualienmarkt ऐसे दिखता है भाई म्यूनिख का Viktualienmarkt. Das ist Viktualienmarkt. Okay. Lebensmittelmarkt. विक्टोरियन का मतलब होता है लेबेंसमिटल. लेबेंसमिटल मतलब खाने पीने का सामान का बाजार. विक्टोरियन मार्ट. So das ist Viktualienmarkt. मार्ट. नंबर से मसाले वसाले सब मिलते हैं यहाँ पे, सब्जियां. एंड द सेकंड वन, और कहाँ थी वो? एंग्लिशन गार्डन. इंग्लिश गार्डन इसको बहुत ही पसंद आया. Das ist dann englischen Garten. Wunderbar. Cool. Okay. Und was noch? एक जगह और गई थी वो. Was war das? Frauenkirche. 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 Okay. Das ist dann Frauenkirche. चर्च है ये. Frauen. कोई जमाने में ये लेडीज का ही था. Okay. Frauenkirche. So. Und im Biergarten auch. Biergarten auch. Biergarten. Hier. Das ist Biergarten dann. Klar. बियर गार्डन ये रेस्टोरेंट टाइप है क्या? ये गार्डन ही है? यूजुअली रेस्टोरेंट होता है सर, पर्टिकुलरली अक्टूबर सितंबर अक्टूबर मंथ में बियर गार्डन बोलते हैं. बियर गार्डन. तो मतलब कोई एक पर्टिकुलर गार्डन का नाम नहीं है. जगह जगह बियर पीने के लिए रेस्टोरेंट्स हैं, उनको बियर गार्डन बोल रहे हैं हम लोग, है ना? कोई एक यहाँ पे टाइम छोटे छोटे ये लोग खरीद लेते, मतलब रेंट पे ले लेते हैं. वहाँ पे छोटे छोटे से गार्डन होते हैं, उसके साथ ये लोग बियर गार्डन अपना पर्सनली भी लेते हैं और वैसे रेस्टोरेंट टाइप में भी होते हैं. तो ये पर्टिकुलर टाइप में ही ज्यादा चलते हैं बियर गार्डन. ओके, गुड. Also das ist dann München, Munich. म्यूनिख की पॉपुलर चीजें हो गई है. चार हाउस. Und वो waren die anderen. सब लोगों ने बाकी अपने अपने वीकेंड का लिख रखा है, क्या किया. एक एक करके पढ़ दो इसको. Vielleicht, dann Pankaj, du beginnst, und dann Arpit, Sanjay, one by one. So, ये वाला पढ़ना है वीडियो. या Freitag, आगे. Okay. Freitag am 17. Und Samstag lange geschlafen mit Annette telefoniert, Buch zu Ende gelesen und Tee getrunken. Und am 18.11. Sonntag? 18.11. Sonntag lange gefrühstückt und Zeitung gelesen, Spaziergang mit Bello, Kino mit Annette. Okay, so hier, das ist dann Tagebuch. Tagebuch means daily diary. लिखा है इसने कि क्या किया. तो जामस्टाग सैटरडे को लंबा टाइम की सोया, lange geschlafen mit Annette telefoniert, बात करी Annette से. बुक zu Ende gelesen, और बुक मेरे को कंप्लीट कर दी थी, वो कर दी मैंने. und getrunken, चाय पी. वाह, ये भी लिखते हैं इसने. lange gefrühstückt, long breakfast. बाकी दिनों में टाइम नहीं होता, वीकेंड में होता है, तो इस दिन तो चूक गया है क्योंकि सोने में निकल गया इसका. बट अगले दिन lange gefrühstückt,
Zeitungen बहुत सारे लोग जर्मनी में वीकेंड न्यूज़पेपर बहुत फेमस है, बाकी दिनों में टाइम नहीं है लेकिन वीकेंड में लोग 2-3 दिन मंगा लेते हैं। Lange Gefrühstück und Zeitung gelesen, Spaziergang mit Bello, Spaziergang मतलब बेलो इनका कुत्ता होगा, उसके साथ में इन्होंने Spaziergang वॉक किया और किलोमीटर आनेटे और आनेटे के साथ यहाँ पे आनेटे से बात कर रहे हैं, वहां से नहीं गया है, जरूर इसकी फ्रेंड है। ओके नेक्स्ट बे wer ist dran? Hallo Thomas, wir haben das Spiel gegen den FC Schwabhausen 0:5 verloren. Verloren, lost, we lost the game 0:5. Mann, war ich wütend. Das heißt für uns Training jeden zweiten Tag. Nächsten Mittwoch kann ich nicht mit ins Kino kommen. Sorry for disturbance, ja. Ich bin von 18 bis 20:30 Uhr beim Training. Das war Football. Okay, klar. So wir haben das Spiel gegen Schwabhausen, आगे वाला जो था ना वो यही है, ये हार गया मैच। मान वारिस ब्यूटेंट, बहुत गुस्सा आ रहा था मुझे, क्या करूं समझ नहीं आ रहा। Das heißt, लेकिन इसका मतलब यह है now every second day we will have training, फुटबॉल हर दूसरे दिन ट्रेनिंग करेंगे, वापस हराएंगे उनको। नेक्स्ट टाइम वो कानिश नेक्स्ट इन स्कीनो आई वोंट बी कमिंग, मैं नहीं आऊंगा अगले जो मिडवॉक को जो हम सिनेमा जाने वाले थे, आई कांट कम। इस बिन फोन आक्सन विश्वा 20:30 beim ट्रेनिंग। अब मेरे को 2.5 घंटे की ट्रेनिंग करनी है भाई। दिस बाल्ट सी यू सून। ओके अर्पित, bist du da? Yes sir. Lies mal dann jetzt. Hey Peter. Sir, say is not here, so hey Peter वाला पढ़ना ना। Hey Peter, vielen Dank für das schöne Wochenende in München. Wann kommst du nach Hamburg? LG Simon. LG Simon है। LG का मतलब है Liebe Grüße। So, vielen Dank für das schöne Wochenende in München. Thank you for this beautiful weekend in Munich. Wann kommst du nach Hamburg? When are you coming to Hamburg? Liebe Grüße. Andreas. Okay, next one. Maybe Manish. Who will read? Reshma, Manish. Andreas, einkaufen, Andreas. putzen, kochen, Oma und 23:15 vom Bahnhof abholen. Okay. So 23:15 या फिर Viertel nach 23. This is the time. आगे इसका मतलब है इसके बाद में टाइम है। So इसने अपनी लिस्ट बना रखी है क्या क्या करना है इसको। Einkaufen शॉपिंग है, Wohnung putzen घर साफ करना है, Kochen कुकिंग करनी है, Oma 23:15 मतलब रात को 11:15 पे बानहोफ रेलवे स्टेशन से दादी को लेके आना है, पिक करना है। सो इसने तो लिखा ये वीकेंड में क्या रेगुलर होगा। ओके, नाउ विल सी सम रिफ्लेक्सिव था क्या वैसे याद है किसी को? Yes sir. क्या होता है रिफ्लेक्सिव, एक बार रिमाइंड The करा। verb mit sich. Mit Pronomen. Verb mit Pronomen. Okay, verb with pronomen. Jish. So, for example, Baden है suppose, तो ये जिश बार्डन होगा। Yes sir. Okay. So एक सेंटेंस बना के बताओ। Ich bade mich um 8 Uhr. Ich bade mich. ये सेंटेंस गलत है क्या? Ich bade meinen Sohn. नहीं सर, दोनों सही है। दोनों सही है, बट फर्क क्या है?
की वॉइस कट गई। फर्क क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस? तो फर्स्ट में मैं खुद ले जा रहा है, खुद नहा रहा हूँ, सेकंड में मेरे सन बेटे को रिफ्लेक्सिव इज सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट इज द सेम पर्सन। और वर्ब तो दोनों में सेम ही है ना? जी सर। यस सर। Second में energy Voice is not clear. My voice is not clear. Oh, my voice is not clear. Shardel. Moment. Ist das jetzt besser? अब बेटर है? ओके। सो दोनों में वर्ब तो बार्डन ही है ना? यस सर। बार्डन नहीं है दोनों में। एक में है जिश बार्डन और इसमें बार्डन। रिफ्लेक्सिव में सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट इज द सेम पर्सन एंड हियर it's not same person, it means it's not reflexive. Ich bade mich. Ich bade meinen John. So reflexive का पूरा reflexive pronoun का टेबल है पूरा ich, mich, Near. near है क्या? Do. This dear. reflexive वाला बोल रहे हो ना? Air. Yes sir. This. Air dish. S. Dish. Z. Wir. On. Ons. Ear. Voice. Z. This. कैपिटल की स्मॉल? Small. Small. This. And last one? This. So ये रिफ्लेक्सिव है। लिपा को भी ले लेते हैं। ओके, सो this is done. Nominative, accusative, dative, but reflexive. Pronomen, reflexive pronomen है इसमें। Class. So ish, mish, mir, and mostly you will use accusative only. Mostly accusative ही यूज होगा। accusative। dative कब यूज होगा वो बता दो बस। मोस्टली सर कोई स्पेसिफिक बॉडी पार्ट का नाम आ जाए, जैसे फॉर एग्जांपल मेरा सिर धोता हूँ तो आएगा क्या? आत्मा। जैसे मान लो बात से मियर कॉप, वॉशर मियर देन कॉफ, ऐसे। यस सर। ओके, मैं अपने हाथ धोता हूँ तो इस बात से मियर दी हैंडेड, वॉशर मियर दी हैंडेड। ओके, तो डाटिव का यूज ये है, मतलब कि बॉडी पार्ट आ जाए तो डाटिव करेंगे। और भी कोई है डाटिव का? जैसे अनसीहन है, अनसीहन। अनसीहन मीन्स टू वियर क्लॉथ, टू वियर क्लॉथ। अगर अनसीहन की जगह जिश अनसीहन यूज करूं तो क्या होगा? मैं कपड़े पहनता हूं। व्हाट विल बी द सेंटेंस? Ich ziehe mich an. इस Ziehe mich an. मिश ऑन। और अगर मैं शर्ट पहनता हूं बोलूं तो Ich ziehe mich ein Shirt an. इस चीयर मियर आइन शर्ट आप, Ein Hemd. इस मियर Mir. Hemd an. ऑन। यस, सो नॉर्मली इस मिश ऑन, लेकिन आप एक स्पेशली कोई पर्टिकुलर उस क्लॉथ की भी बात कर जाते हो तो फिर नियर विल बी डाटिव एंड देन दैट क्लॉथ विल बी एक्यूजेटिव। इसके लिए भी डाटिव आ जाता है।
ओके, मतलब जब ऑलरेडी एक आकुजाटिव कुछ अवेलेबल है तो उस केस में ये डाटिव हो जाता है। इसके अलावा 2-3 वर्ब थी, वो मैंने बोला था वो रहने दो आप, जैसे आउस्टेंकन, जिशमेरकन, आउस्टेंकन, जिशमेरकन, फोर्स्टेलन। इनमें दिमाग में सोचते हैं अपन, उस वाले केस में डाटिव आ जाता है। इशमेरकमियर अब क्यों आ जाता है इसको नहीं पता। जिश फोर्स्टेलन, इशस्टेलमियर फोर, इसका मतलब है आई इमेजिन। तो ये डाटिव का केस था। ओके यस, तो ये किया हमने अभी। इशमिश डूका, एरसी, वियर, ईयर ऑइस, जीजी जिश। तो ये आकुजाटिव ही रहते हैं, ये कह रहे हैं। ओके, जिश आउशरुअन, जिश उमसियन, ना खौजे फारन, ये भी रिफ्लेक्सिव है क्या? Yes, sir. Telling about their own house. नहीं, इसमें ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। रिफ्लेक्सिव होती तो जिस आता ना, ये तो बीच में एक आध बिना रिफ्लेक्सिव का भी, क्योंकि हर में थोड़ी अपन रिफ्लेक्सिव लगा सकेंगे, हर जगह नहीं लगा सकेंगे। मैं ये नहीं कह सकता इस एसएमएस, इस कॉकहेमिश, ऐसे हर बात का वो नहीं कर सकते, बट ज्यादातर में था तो बीच बीच में एक आध इस तरह का भी, क्योंकि जो मिक्स चलता है। तो सो आउसवेहन इज टू रिलैक्स, जिस umziehen is to wear cloth, nach Hause fahren to go home, जिस schminken, ये क्या है? जिस schminken, Comb your hair. Combing your hair. वो तो Oh sorry, no. Applying cream, powder, makeup and all. Okay, yes, klar. जिस rasieren, Shaving. etwas trinken, जिस duschen, what is duschen? नहाना, जिस eincremen, जिस abtrocknen, eincremen, abtrocknen, to apply cream and abtrocknen क्या है? टॉवल से बॉडी को सुखाना, abtrocknen। अगर eincremen आपको बोलना है कि मैं तो क्रीम लगा रहा हूं या लगा रही हूं, तो क्या बोलोगे? यस, मतलब ये सेपरेबल हो जाएगा, तो आइन और अब वाला दोनों सेपरेबल हो जाएंगे, बिल्कुल सही। ओके, ये फेराइन्स लेबन, क्लब लाइफ। तो इन्होंने कुछ क्लब्स के लोगोज दिए कि आपको अंदाजा लगे, क्लब लाइफ भी बहुत इंपॉर्टेंट है वहां पे जर्मनी में। तो हाइन स्टार्स क्यूल, ये किस टाइप का क्लब है, क्या होता होगा इसमें? Basketball. ओके, बास्केटबॉल। हियर क्योलनर कार्निवाल, कार्निवल बनाते होंगे लोग। वर्क स्टार्ट, फोटो वर्क स्टार्ट, फोटोग्राफी वर्कशॉप, फोटो वर्क स्टार्ट, फोटोग्राफी से रिलेटेड है जो मामला। ओके, अगिलिटी टीम कोलोन, ये हुंडे शूल लग रहा है, डॉग स्कूल लग रहा है कोई। ओके, in Verein lernt man schnell Leute kennen. In clubs you get to know people easily and fast, schnell. What कौन सी है इसमें? Lernt, So what? Kennenlernen. Kennenlernen. Yes, Kennenlernen. Because जो पहले होता है वो पार्ट लास्ट में आता है ना, so Kennenlernen is the verb. Second part you conjugate. Why does hobby für alle wichtig ist? Because hobby is important for everyone. The Mitglieder treffen sich regelmäßig. Members meet regularly, regelmäßig. Und betreiben ihr Hobby. Aber sie feiern auch Feste zusammen. They celebrate festivals.
oder renovieren das Verein sein. मतलब ये लोगों सबके लिए हॉबी इम्पोर्टेंट है. They go there, meet people, meet the members regularly, and they spend time with people with their hobbies. Aberji Feuernauf Feste. They also celebrate festivals together with each other. Renovieren das Vereinheim, जो भी क्लब का होम होता है उसको भी मिलके रिनोवेट करते हैं वो. So then यहाँ पे आपको कंबाइन करना है कौन सा क्लब कौन सी हॉबी के लिए है. आमने सामने नहीं है सारे. ये राइन स्टार्स आया था ऊपर. राइन स्टार किसका था? Basketball spielen. या हियर बास्केटबॉल स्पीलन. फोटोग्राफियरन, व्हिच वन? Agility team. फोटो वर्क स्टार्ट कर. Agility team. Mit Hunden Sport machen. Okay, mit Hunden Sport machen. Tanzen lernen. Concert. Finding talent aid. डांस में कोई लग रहा है? So color carnival. Okay. Folk dance, ये हो सकता है. Folk dance. Dance is there. Folk dance. Folk dance. So then it may be tanzen. Ride Verein. Ride. Riding. Mit anderen. Okay, mit anderen reiten. It may be then ride. Riding. Then im Chor singen. Concert call. Chor. Yes, chor is there. Yeah. Und dann Carnival feiern. Okay, so these are the clubs. So in clubs, Tennis Verein, Reitverein, Chorverein, Wanderverein, Sport Club, Kunstverein. So all these clubs. In the clubs, people of the same interest meet, and there are so many clubs in Germany. So club life, Vereins Club. Ja, dann Shilpa, kannst du das lesen bitte? Landeskunde? Some general knowledge, some information about Germany's club. Ja. Vereinsleben in Deutschland. Im 19. Jahrhundert haben Arbeiter in Deutschland Gesangs- und Turnferien gegründet, weil Verein verboten waren. Heute gibt es in Deutschland 580 it is point or 580.000. thousands, okay. 80.000 298 Vereine. Vereine mit mehr als 71 Mitgliedern in Vereinen engagieren, okay. Sich nicht nur sportlicher. Es gibt auch politische
Vereine und Interessentenvereine, zum Beispiel für Autofans, kann sich Schuster oder Schützer, okay? Schützer, ja. Oder Naturschützer. Club. So in Germany is famous for clubs. They are saying in 19th century, im 19. Jahrhundert haben Arbeiter in Deutschland Gesang- und Turnvereine gegründet. In 19th century, people established Gesang, singing clubs and Turnvereine, मतलब physical activity clubs वगैरह gegründet. They have established. While politische Vereine verboten waren, because that time political clubs were not allowed. Heute gibt es in Deutschland 580.000, मतलब 5,80,000, 580.298 Vereine. So many clubs are there. Mit mehr als 71 Millionen Mitgliedern. And उसके clubs के सबके member मिलाओ तो 71 million. जर्मनी की population 82 million. But so how will you say this? 580,000. 1000. 580.000, dann 298. Okay. Yeah. Because आपको 100,000 बोलना पड़ता है ना, 100,000, 1 lakh, Yeah. 100,000, Yeah. 500,000, 5 lakhs, Yeah. 500,000 बोल रहे थे, अब बोलेंगे 580,000, 500,000 थे, अब ये 580,000 हो गए, Yeah. and then Okay. 100. So 71 million members. So actually ये कुछ लोग मल्टीपल क्लब्स के मेंबर है, इसलिए इतने सारे मेंबर आ रहे हैं, वो रिपीट हो रहे हैं, ऐसा नहीं है अदरवाइज इतने लोग मेंबर हों, बट एक ही बंदा 4 क्लब में मेंबर है तो 4 जगह उसको काउंट कर रहे हैं. यस. सो आधार कार्ड, इंडिया में जितने आधार कार्ड है वो पॉपुलेशन उससे कम है. ओके, कई जगह बन गए शायद. खैर, in Vereinen engagieren sich nicht nur Sportler, not only just sport persons engage themselves in clubs. Es gibt auch politische Vereine. There are also now political clubs und Interessenvereine, and there are clubs as per people's interest. For example, German Speakers Club बना लिया हमने, हमारा इंटरेस्ट जर्मन में है ऐसे, तो लोगों ने ऐसे स्पोर्ट का हर तरीके के क्लब्स बना रखे हैं, सिंगिंग के. फिर ऑटो फार्म्स, देन एग्जांपल इज हियर, ऑटो फैंस, कानिंशन शुट्सर, कुछ लोग रैबिट्स को प्रोटेक्ट करते हैं, उनकी केयर करते हैं, कुछ लोग उनको ब्रीडिंग करते हैं, नाटवर शुट्सर, नेचर को प्रोटेक्ट करने वाले. ऐसे अलग अलग तरह के लोगों ने अपने अपने क्लब्स बना रखे हैं. So ist es. Und jetzt die Hausaufgabe. Now Homework. Also Sie haben nur 2. आज आपको 2 होमवर्क मिलेंगे, एक ये वाला, ये भी क्लब के बारे में ही है. ये अपना एक्सपीरियंस बता रही है कि मैं जब जर्मनी में थी तो वहां पे क्या तमाशा देखा मैंने क्लब्स का. So just read and then you have to mention from the text, father in which club he was member, mother in which club she was. So these people were a member in different clubs. So das ist eine Hausaufgabe. Just read and then find out the answers. And the So next, welche Seite? das ist dann Seite 75, 75. Und dann noch eins. Only one more. Welche Seite nochmal? Noch einmal? 81, पेज नंबर 81 वाला. Okay. 81 पे 2 एक्सरसाइज है, एक ऊपर है एक नीचे है, दोनों रिफ्लेक्सिव की हैं. सो 8th and 10th. सो ये रिफ्लेक्सिव की प्लस
story experience of the lady about clubs in Germany.